Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ali Bhai with my new video. In this video, I will give you complete and detailed formulation of magnesium stearate. Now come on for the process. For magnesium stearate, first of all, we have to make sodium stearate. Take little amount of stearic acid and raise the temperature 60 to 70. In meanwhile, the temperature raise, we have to wait and dissolve sodium carbonate, soda ash. Dissolve well. Stir well and dissolve all particles. Now come on stearic acid. When it dissolved all stearic acid and melt just like a liquid, add solution of sodium carbonate. Then it will get start reaction. Raise the temperature between 95 degrees centigrade to 100 degrees centigrade. This total process is almost 3 to 4 hours. Check this. Separation is continue. It is sign that stearate reaction is going to proceed. In meanwhile, we have to wait and dissolve magnesium chloride. Yes, magnesium chloride for magnesium stearate. If you feel this is my formulation is authentic and this is suitable formulation, then please subscribe my channel and click on bell icon for more notification of more videos, and must share my video to others, like and comments as well. All detail of formulation is end of video. How many weight you will see the end of video. Now dissolve well until the last particles has been dissolved. Very sorry. Now come back on sodium stearate. The process is going on. Temperature has been raised near about 95 degrees centigrade. When you see separation of water is going to high level, it's sign of that your stearate is near to finish. The reaction is almost complete. Now sodium stearate has been finished. Now we have to add a solution of magnesium chloride. After adding solution, temperature will be down, but you have to raise temperature between 95 degrees centigrade to 100 degrees centigrade. It will take
3 to 4 hours. When you go for bulk production, there are lot of vessels and machines. I will update you in next my videos uses of our stearate and regarding machine information, which kind of machine required for this process. I will told you in upcoming videos. Now temperature goes too high. The reaction is going on. Look on bottom of beaker. The separation of water is going to high level. It's sign that your stearate is near to finish. Reaction is going to complete. Just watch bottom of the beaker. Just watch. When I stir, there is no any stearate under the water. The stearate is upper level of water. Check. Now add the water for washing of sodium chloride. When we have to react sodium stearate with magnesium chloride, it becomes magnasium stearate, and the byproduct of this process will be sodium chloride. To wash sodium chloride, क्योंकि to नमक जो remove होता है sodium पानी में chloride, हाइड्रोजन we होता have है, to वाटर wash सॉल्युबल होता है, many इसलिए times, बाहर 4 आपको to नजर 5 नहीं आ रहा times. होगा, लेकिन इसमें नमक इसकी बाई प्रोडक्ट है। When नमक को you वाश करने के लिए हमसे 4 से 5 मरतबा इसको process in वाश bulk करेंगे। level, there are lot of vessels, आपको हर automatic दफा vessels, इसको हीट देनी पड़ेगी so ताकि नमक जो है there is वो no निकल any जाए। hurdle to wash. You will add इसको the अच्छी तरह मैंने water पॉट में डाल के in vessel तो and process, then हल्की है drain the और water. इसमें मैं The मजीद पानी ऐड करूंगा ताकि washing ये process will be complete, but because in नमक lab जो है वो level वाश हो जाए, we have to क्योंकि अब जब वेसल में process करेंगे, वेसल में तो ये in चीज़ें this नहीं होगी, वेसल में तो circumstances, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। तो add यहाँ पे water सिर्फ आपको समझाने के for लिए मैं washing. कर रहा हूँ। When you add water, वेसल में तो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। upper side of पानी water, ऐड करेंगे, पानी ऐड करके upper तो इसकी side of फिल्ट्रेशन water, करेंगे। there are lot of powder, जो not any ऊपर liquid, ऊपर है because पाउडर आया हुआ है magnesium बेसिकली, stearate has तो been पाउडर को completed, अलग करेंगे but we are ताकि removing salt आपका जो particles मैग्नीशियम स्टीरेट है by this वो अलग हो process. जाए और पानी अलग हो जाए। Now I will filter. इसको मैं फिल्ट्रेशन करूँगा, निथार लूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप वेसल में करेंगे तो वेसल में आपको ये Repeat प्रॉब्लम this नहीं होगी, process 4 to 5 times क्योंकि वो तो एक for ऑटोमेटिक removing सिस्टम होगा। पानी फिल salt किया particles. और प्रोसेस हुआ और पानी ड्रेन कर दिया। ये सारा मैंने निकाल के अच्छे तरीके से Then इसको again, दोबारा रखा है, इसमें पानी temperature डाला, पानी डाल के तो raised मैं दोबारा 95 degree टेम्परेचर centigrade to इसको 100 दिया degree centigrade. ताकि ये 4 to 5 इसकी times. वाशिंग अच्छी Repeat हो this जाए। process, आपने 4 add से 5 water, मरतबा ये प्रोसेस कराना है। washing, जब ये filtration, बिल्कुल then इसमें से again नमक निकल 4 जाएगा to तो 5 फिर आपने इसको times. ड्राई करना है। Repeat this बेशक सनलाइट process. में कर लें, सनलाइट ना हो Now तो आप मशीन में भी कर सकते हैं, magnesium वैसे stearate सनलाइट में has कर लें been ज़्यादा complete. बेहतर है। तो वो ये इस फॉर्म में आ Dry जाएगा। it. ये बिल्कुल वाइट पाउडर बन गया। इसके बाद आप इसको ग्राइंड करें अच्छे मैश पे। And आप किसी go पाउडराइजर to में या इम्पैक्स पे इसको ग्राइंड करें, मजीद a अच्छा इसका मैश very करें तो ये special मजीद लाइटवेट mesh हो जाएगा। up to 200 per polarizer. चले or आते हैं जी इसकी impact फॉर्मुलेशन की machine. तरफ। It will be ये है जी a मैग्नीशियम very स्टीरेट, bulky स्टेरिक product. एसिड 48 kg डाला है, सोडियम This कार्बोनेट is the formulation of magnesium डाला है, stearate, मैग्नीशियम stearic acid क्लोराइड जो है 48 35 kg, किलो डाला है। sodium पहले carbonate, जो स्टेरिक soda एसिड और 18 सोडियम kg, कार्बोनेट से magnesium chloride ये 35 kg. सोडियम स्टीरेट First बना of है। all, सोडियम स्टीरेट we से have to जब मैग्नीशियम क्लोराइड process डाला है तो ये and मैग्नीशियम reaction स्टीरेट बन with गया। stearic acid and sodium carbonate. वीडियो अच्छी लगे तो sodium मेरी stearate वीडियो and then add आगे लाजमी शेयर magnesium किया करें। chloride. काफ़ी As लोगों के told you रोजगार का in सबब बनती video. है। ये दुआ में याद रखें, पाकिस्तान में This is दुआ में जरूर complete याद रखें। formulation.
तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। इफ़ यू फील माई फॉर्मुलेशन इज सिंथेटिक, चले जी सब्सक्राइब माई मिलते चैनल। हैं किसी Now अगले we will वीडियो meet में दे in next टॉपिक any और दे video आर्टिकल के साथ। with any तब other तक के लिए topic, इजाज़त with दे, any other दुआ article. की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम Now goodbye. रहमतुल्लाहि व Assalamu बरकातुहू। alaikum warahmatullahi wabarakatuh.